morning. Good morning. See, it's my pleasure to introduce my faculty because I learned my CA final with Ashish sir, not just me, Naval sir, Atul sir. We all are actually students of Ashish sir. He has a wide experience of more than 22 years of teaching at CA final. The first time ever, and he's a national faculty for account as well as financial management for final. And first time ever, he is coming for CMA students. So I'll wish all of you must take a maximum advantage of this opportunity which is there with us. So he's now associated with us so that we can serve more better to the students. Along with Inter, he's also there in the final also. So I wish the advantage which I took when I was in a final CA, I wish you also will take the same advantage. Thanks, sir. Thanks for coming. Floor is yours now. Thank you very much. Yeah, thank you, Siddharth, for a wonderful introduction. Okay, he gave a very formal introduction. I'll give an informal introduction. Mike? Audible, no? Yes. Fine. If you're not audible, there's a lot of space. Then you better come here. Yeah, so what can be my informal introduction? See, I cleared my chartered accountancy in May 2001. Right, so 13th July, I still remember because today is 15th July, right? 13th July 2001, it was my result. Just 2 days back when I cleared my CA. So it's almost 2001, 21, so 20 years. So it's 20 years of completing CA. I completed all the levels of CA in the very first attempt, which at that time, today, a lot of students are able to do that. But at that time, it was actually a big achievement. So I cleared, as I said, just 2 days back, every result day, those feelings always return back. Today also, there is a CA final result actually. And many of my students have cleared even today. But I was very much inclined in teaching since a very young age. Okay, so it was very clear that I want to get into teaching. What school days में होता है ना, ऐसे लिखना होता है, what you want to be when you grow up. आया है कभी आपको स्कूल डेज में ऐसा कोई ऐसे लिखना, आपको क्या बनना है आगे जाकर? Yes or no? Yes. So कितनों ने लिखा था तब कि हमें सीए में बनना है? How many? Anyone here? कोई नहीं? Not a single? Oh my God. लाइफ ने क्या करवट ले ली, isn't it? क्या सोचा था क्या हो गए? तब तो आई थिंक एस्ट्रोनॉट बनना होगा, शायद पायलट बनना होगा, डॉक्टर, इंजीनियर. हाउ मेनी? आई मीन क्या है आप लोगों का? आई मीन इन जनरल क्या बनना था? कभी सोचा ही नहीं? ऐसे में ऐसे ही लिखते थे. कोई फ्रेंड लिख रहा है डॉक्टर तो मैं भी डॉक्टर. What was the general? I mean, pilot. How many? I mean, how many wanted to become a pilot or something? कुछ बनना तो था ना आप लोगों को. सीए में भी नहीं बनना था, पायलट भी नहीं, डॉक्टर, not even doctor, engineer. Okay. तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि आप लोगों को क्या बनना था. एस्ट्रोनॉट? At least give me some idea what you wanted to be. लेकिन सीए में तो नहीं करना था, वो तो क्लियर ही था शायद. I think up to 10th, what's the problem? Up to 10th standard, we know a lot about science, but very little about commerce. Do you agree with me? Yes. Because we just don't know that what will happen, if you take commerce, what are the
options which are there in commerce, what exactly we can do. हमारा तो कैसा होता है, साइंस नहीं करना तो कॉमर्स ले लिया, फिर सोचेंगे कॉमर्स करने के बाद सोचेंगे कि भाई अब एग्जैक्टली स्पीकिंग क्या करना है. Is it like that? If I tell my, very honestly, since it's the very first day, I'll be as honest with you as possible. I did not like maths. वो trigonometry वाला, वो addition, deduction, वो सब समझ में आता था मेरे को, but I never understood trigonometry. And another problem was geometry. वो भी मुझे कभी भी समझ में आया ही नहीं, right? वो सर्कल बनाओ, लाइन बनाओ, दो पैरेलल जा रही है, कभी मिलती नहीं है. I never understood that. फिर उसमें कुछ postulate आता है और theorem आता है, वो उतना देख के ही समझ में आ गया कि ये साइंस अपने से होने वाला नहीं. And when I was studying, we did not have that option जो आजकल होता है साइंस में, that you can leave, maths. If you want to be a doctor, तो maths छोड़ दिया, या engineer बनना है तो biology छोड़ दिया. It was not so at our time. So one thing became very clear that maths तो नहीं होगा. So फिर क्या करेंगे, science तो नहीं कर सकते. So commerce, isn't it? आप लोगों का कैसा रहा था? How did you decide for commerce? Same. 20 साल के बाद भी वही कहानी, no change. मैथ्स से ही परेशान थे सर? Is it? Although फिर अभी तो पूरे दिन मैथ्स ही करते रहते हैं, कैलकुलेटर लेके, एडिशन, डिडक्शन, वही करते रहते हैं. But still, that maths we can manage, but that trigo thing, it never happened. And I still remember, मेरा तो इतना प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे, because I had to give CA foundation, और CA foundation में भी मैथ्स आता है, और CA फाउंडेशन के मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री आता है, और उसमें भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब आएगा. एंड आई वाज लाइक कि यार इससे तो पीछा छुड़ाने के लिए मैंने कॉमर्स लिया, एंड अगेन इट इज द सेम थिंग व्हिच हैज रिटर्न्ड बैक. सो आई स्टिल रिमेंबर आई टॉक टू माय टीचर आल्सो कि भाई आगे जाके ये कुछ आने वाला है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा तो उसके बाद मुझे ट्रिग्नोमेट्री या वो कुछ अप्लाई करने का आएगा. एंड ही वाज वेरी क्लियर कि नहीं आएगा, एंड आई वाज सो रिलीव्ड. मैं ये छोड़ रहा हूँ ऑप्शन. आई कांट रियली डू दिस थिंग. थोड़े मैथ्स में मार्क्स कम आएंगे, कोई बात नहीं, स्टैटिस्टिक्स में ले आएंगे, बिकॉज इट्स यूज्ड टू बी मैथ्स एंड स्टैट्स कॉम्बो, सो वी विल मैनेज इट इन दैट वे. सो दैट वाज माय रीजन दैट व्हाई आई स्टार्टेड विद कॉमर्स. एंड देन it was a trend at that time that you have to do CA या CMA, so limited choices are there. And then so many times what our friends are doing, we many times do that also. क्या कहते हो आप? कितने लोगों ने CMA ऐसे शुरू किया? कभी फ्रेंड्स भी कर रहे हैं तो साथ में कर लेते. No one? सब इंडिविजुअली आए हो? Is it so? So that's really good that it's your individual decision. Otherwise, many a times we join just because everyone else is, just because biodata में लिखना पड़ेगा ना कुछ आगे जाके, CMA कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना घर पे भी कि सिर्फ FI BCom नहीं कर रहे, साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, प्रोफेशनल कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री. So that might also be the reason. But yeah, that is how we get finally introduced. And then gradually we start understanding that commerce is not really as easy as people believe it to be. Because I still know that when I decided to do commerce, so many people were coming to my parents and asking them कि आपका बेटा इतना होशियार नहीं है कि उसने कॉमर्स ले लिया. हमें तो लग रहा था कि वो तो काफी होशियार है, वो साइंस लेगा. आज भी ऐसा ही है कि थोड़ा चेंज हुआ? स्टिल सेम थिंग. कॉमर्स लिया मतलब इसमें कुछ दम है नहीं, but then we know, right? When we do commerce, we know that when we are doing CA or you are doing CMA, it's definitely not a cakewalk. So if you are like that, commerce, you are joining commerce, that means life is set. अब तो कुछ पढ़ने का ही नहीं, ऐसे ही सोते सोते डिग्री आ जाती है.
ऐसा कुछ होता नहीं है, right? We have to really put in a lot of efforts. It's not really as simple as people, I mean, assume it to be. Okay? It is that much easy. It is not really so. I'm sure that you have reached at the CMA inter, so उतना तो आपका clear हो ही गया होगा, right? That a lot of effort, a lot of work from our side is also required, right? But as I said, I was very much inclined in teaching. So I just completed my CA in 2001. And immediately in December, I launched my academy also. I called it as Pinnacle Academy. I started with it. But getting the first student was very tough. Let me tell you, very tough. Why? Because I cleared everything, in the first attempt. So I was around 21, 22. And prospective students used to come, to meet me. And when they will look at me, they'll be like, "Ye kya padhega? Itna young, abhi pass hua hai." Right? So how exactly will he be able to teach? But that's how the journey really started. And it's been going on really well. It's, as Siddharth sir rightly said, it's my first time that I'm addressing CMA students. But I personally believe whether you are a CA student, CMA student, CA student, ultimately you are a professional student. So it doesn't really make much of a difference. Jo commitment chahiye, that commitment more or less is the same. And expecting that whatever is, I mean, the commitment which is required, right? I will get it from you guys as well. Yes or no? Yes. Of course, ये batch का एकदम starting है ना? Yeah. अब I've normally seen जब batch शुरू होता है ना, तब we are all giving our best. मुझे भी impression बनानी और आप लोगों को भी. Am I right? Yes, really. मैं तो ऐसे जोक में ही कह रहा था. It's really like that. कि अभी थोड़े दिन जाने दो. Then we will show our true colors. Isn't it? अभी तो blind में खेल रहे हैं. Isn't it? पत्ते तो बाद में दिखाएंगे. ऐसा कुछ तो नहीं है ना? Right. So because that happens in every relationship, right? If you have ever been in any relation, have you ever been in any relation till now? Starting में सब अच्छा ही होता है ना? Never been? Oh my God. CMA. Time ही कहाँ? Isn't it? Just think for a moment. Just think for a moment. Just hypothetically, just think that you have just recently got engaged. Hypothetically, एक दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है. So let's say you're just hypothetically engaged. क्या लगता है? If you just got engaged, what will be the initial phase? All good? वो सामने वाला कुछ भी कहेगा, you will be like, okay, fine. शांत. रहने दो. Abhi starting hai, isn't it? And then you ask a person like me, right? With after so many years of marriage, we take people for granted. उसको कि कुछ पढ़े नहीं, मैं कहाँ हूँ? मुझे भी पता नहीं अभी वो क्या कर रही है घर पे, right? No one is really interested because we got used to it, right? So अपना अभी एकदम initial phase है. So I'm sure you will be very nice to me. I'll be, of course, nice to you, but you guys will also be nice with me. और फिर वो चालू रहे. Okay. Fine. So what I'm supposed to teach you guys in CMA is, you have a topic known as accounting standards, and that is the topic that I am supposed to deal with, right? Basically, there are total 29 accounting standards. अगर numbers wise देखोगे तो there are 29 accounting standards. उसमें से 2 accounting standard withdraw हो चुके हैं. AS6 and AS8, they are withdrawn. So by numbers, you can say there are 27 accounting standards. 27 accounting standards में से आपके syllabus में सिर्फ है 5. So you are supposed to study only 5 accounting standards.
right? And the 5 accounting standards that I am supposed to deal with you, they are what I can say, touching simply the surface of what we understand as accounting standards. So we are having some extremely simple, easy to go accounting standards. We don't have to really put too much of our effort. But yes, they are basically creating a base, because in finals, once you reach CMA finals, you have an entire paper dedicated to financial reporting, where more of the accounting standards you will be studying. लेकिन आपको थोड़ा base मिल जाए, that is the intention of this particular topic, that why they have introduced it. Otherwise, overall, the topic is not really that lengthy. Some simple 5 accounting standards, that is what we are supposed to deal with. But most important thing, and the most basic thing I would rather say, is that what do we really mean by an accounting standard, isn't it? Or हमें ये क्यों पढ़ना है? You know, I always feel that till we do not know why we are studying something, there's no motivation to learn that. What do you say? Exam एकदम पास में आ जाती है, then motivation आ जाता है ना कि भैया पास होना है, तो वो मोटिवेशन से हम पढ़ लेते हैं. उस टाइम पे so many times कुछ बात हमें समझ में भी नहीं आ रही है, फिर भी we are studying, भाई ये करना तो पड़ेगा ही, समझ में आए कि ना आए. But right now we have quite a bit of time in our hand. Till we don't know why we are supposed to, study this topic, मजा नहीं आएगा कि क्यों पढ़ने का मुझे, right? वही सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले भी मेरे मैथ्स के टीचर को पूछा था कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों है फाउंडेशन में, जब उसका आगे कोई एप्लीकेशन नहीं आने वाला, then why have they put it unnecessarily over here? And the moment he told कि आगे नहीं आएगा, I lost all my motivation कि अब मैं क्यों मेहनत करूं ये समझने के लिए. So that's the reason, first and foremost, it's important that we realize what is the reason that we have to study this particular topic. Let me ask you one thing. Accounts 11 से शुरू हो गया? Right, 11th standard, you must have been introduced to accounts for the very first time. I still remember, इतने साल हो गए, then also I still remember my first days, initial days of commerce. क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि कॉमर्स में क्या है. साइंस में पता था कि फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, ये आता है वो, यहाँ तो सिर्फ इतना ही पता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स आता है, मैनेजमेंट आता है, लेकिन अंदर क्या आता है, no one knows anything, right? So I still remember that very first day we are waiting for our accounts teacher कि भैया आएगा कुछ कहेगा कि what exactly is accounts. And I still remember पहले ही दिन he started with types of accounts और फिर debit credit rules, right? और पूरा accounts, he was like that everything is based on this debit credit rules. अगर ये आपको आ गया तो फिर आपको accounts आ गया. Today I realized that how wrong it was, right? चाहे कितने भी debit credit rules आपको याद आ जाए, एग्जाम में बैलेंस शीट टैली होगा कि नहीं होगा? मोस्टली नहीं होगा. कितनों की टैली होती है बैलेंस शीट एग्जाम में? कभी बनाया नहीं ऐसा है? बनाया बैलेंस शीट, टैली हुआ? कितनों का होता है कि एग्जाम में कभी किया ही नहीं टोटल? क्योंकि पहले से इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि टैली होने नहीं वाला, तो फिर टोटल क्यों करना है? अननेसेसरी दिमाग में लेके जाने का टैली नहीं हुआ. What do you say? किसी का भी टैली नहीं हुआ? हाँ, never. So it's very clear ना, डेबिट क्रेडिट रूल से कुछ होने नहीं वाला है, राइट? क्योंकि अगर डेबिट क्रेडिट से ही पूरा किया होता तो ऑब्वियस है our balance sheets would have definitely tallied. So can you tell me one thing? Is accounts a science or is it an art? ऐसा मत कहना कि वो कॉमर्स है, वो हमें वो कॉमर्स में ही है, लेकिन वो साइंस है या आर्ट? बोथ. ये ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं था. बोथ. I had asked, is it science or is it an art? Art? कौन कितने लगता है आर्ट? थोड़ा हाथ वो सब उठाना मेरे को. I mean, no, I'm not going to catch you guys कि ओह तुमने कहा था. Why do you feel like that it's an art? Anyone? If you can add. क्यों आर्ट लगता है आपको?
बस ऐसे लगा, मुझे मन हुआ गया आर्ट ही है। एनीवन एल्स, मतलब जिसको लगता है ये आर्ट है, व्हाई इज इट एन आर्ट? ओके, बाकी सबको साइंस लगता है? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ उनको साइंस लग रहा है। ये कैसा, कॉमर्स में साइंस पढ़ रहे हो सर? व्हाई इज इट अ साइंस? एंड हाउ मेनी फील इट इज बोथ? Because that's the right answer. I'm sure now everyone will raise the answer. किसको लगता है it is both? Because उसमें क्लास समराइज होता है, क्लासिफिकेशन होता है, इसलिए उसे आर्ट कहा जाता है। Okay. और साइंस क्यों कहते हैं? There are systematic rules, debit credit rules. भले ही आप कुछ भी कह लो, but all the accounting entries will be based on debit credit rules only, and it's very true. That's how it actually works. Every transaction you can identify what is your asset, what's the liability. Accordingly, you can record the accounting entry. In any transaction, you can identify कि इसमें income क्या है, expense क्या है. Accordingly, you can record the accounting entry. So there are rules. ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हम करते हैं. That's the reason we can say it is a science, but it is not a perfect science. And because it's not a perfect science, there is possibility of maneuvering it, right? There is a possibility of making changes in it. And that's the reason we can also consider that to be an art. So it is both a science, but not a perfect science. Kyun perfect science nahi hai? Because of assumptions, right? How was your reaction when for the first time your accounts teacher made an assumption? आपको याद है फर्स्ट टाइम अकाउंट्स टीचर ने आपको कहा हो एज्यूम कर लो, नीचे नोट लिख देने का assumption? I still remember I was shocked like anything. तो ये क्या हो गया? How can you make an assumption? You know, this is how exactly it is, right? So even today also when we teach accounts, we tell our students, okay, if you have made some assumption, you should be writing the assumption at the end. You should make a list of your assumptions. So many times as student also we do ना, we make assumptions which suit our answer. क्या है कभी ऐसा? पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर बाद में पता चला रही या तो मिस्टेक हो गई, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि पूरा चेक पूरा काट के वापस सॉल्व करे, तो दिमाग में आ गया, एक एजम्पशन बना देते हैं, वो एजम्पशन के हिसाब से ये आंसर राइट है, सो वी मेक दैट एजम्पशन एंड देन वी गो एंड आर्ग्यू विद आवर अकाउंट्स टीचर के सर एजम्पशन तो लिखा है, यू शुड गिव मी मार्क्स बिकॉज़ दिस इज द एजम्पशन दैट आई हैव रिटन. हैव यू एवर डन दैट? आई एम गिविंग यू आइडियाज, ऐसा लग रहा है मेरे को. आज तक किया नहीं, लेकिन ये आइडिया अच्छा है. अब नेक्स्ट टाइम कोई मिस्टेक हो जाएगा सिद्धार्थ सर के हायर परचेज, आई थिंक इज टेकिंग हायर परचेज, तो हम भी एक एजम्पशन डाल देंगे एंड में कि आशीष सर कह के गए थे एजम्पशन डाल देने के मार्क्स मिलते हैं. बट देन दैट इज हाउ केसेस. सो दैट क्लियरली शोज दैट इट इज नॉट परफेक्ट. साइंस में कभी एजम्पशन नहीं हो सकता, राइट? द लॉज ऑफ साइंस, देयर आर नो एजम्पशंस ओवर देयर. कोई चीज अगर इस तरीके से होगी तो उस तरीके से ही होगा. But that is not so in case of accounts, and that's the reason we require accounting standards. There are so much of variety of things that I can actually do in accounts that we need someone to come and tell us, see, these are the things which are possible and these are the things that you should not be doing. Take framework mujhe chahiye, and that framework will be given by an accounting standard. Because it is not perfect, accounts is not a perfect science, right? But we are trying to make it a perfect science. This is what we are trying to do. In accounting standard, we are trying the person who is preparing the financial statements कि see, आप 5 चीजें कर सकते हो, हम एग्री करते हैं, आप 5 चीज कर सकते हो, लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको ऐसे ही करना है, so that when I see the P&L and you see the P&L, we know that this is how the P&L would have been prepared. Otherwise, आपने P&L में कुछ किया है, मैं सोचता हूं कि नहीं, अगर मैं P&L बनाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा, and now when I see your P&L, I will see your P&L as per my assumption only, and I will not be able to understand the way you have prepared it. This is the reason that we require accounting standards, because accounting standard will codify how things are required to be done.
Who is preparing the accounting standards? In India, we have ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, which actually prepares the accounting standards. They have what is known as Accounting Standard Board. They prepare accounting standards. But these accounting standards, which are prepared by them, are applicable only to proprietary concerns and partnership firms. For companies, we need a statutory body which is saying that, okay, these are the accounting standards which are applicable to a company. So central government ne kya kiya hai? They have formed one authority known as NFRA. Those accounting standards are notified by NFRA and then they become applicable to the companies. So now today, आज का position अगर हम देखते हैं, तो आज का position ये है that accounting standards are notified under the Companies Act. So Companies Act में ही accounting standards हैं. They call it as accounting standard rules, and hence they are applicable to the companies. पहले ऐसा नहीं था. When I was studying, it was not like that. It was very interesting. You know, when I was studying, what was the problem? Accounting standards were not notified under the Companies Act. They were only notified by the Institute of Chartered Accountants of India. So बहुत सारी ऐसी companies थी, they were saying accounting standards are not applicable to us. कि कहाँ Companies Act में कहाँ लिखा है कि हमें accounting standard follow करना है. So I still remember when I used to go for audit, right? तो कुछ accountants जो company के थे वो हमारे साथ argument करेंगे कि accounting standards किसने issue किया? We will like Institute of Chartered Accountants of India ने issue किया. तो आप कौन हो? We are members. तो अगर आपको applicable है, हमें applicable नहीं है. मैं accounting standard apply करके मैं क्या करूँगा? Right? It has to be applied by the company. So now they are notified under the Companies Act and hence they are very much applicable. जैसे accounting standard है, ऐसा अब नया भी आया है, which is known as Indian Accounting Standard. उसका short form है IND-AS, right? So that is yet another thing which is there. Accounting standards are applicable to companies. IND-AS is also applicable to companies. तो फिर दोनों में difference क्या है? IND-AS is applicable only to selected companies. जैसे कि listed companies. इंडिया में जो listed companies हैं, they are following the IND-AS. और जो छोटी private companies है, private limited companies, they are following the accounting standards. So जब हम सिर्फ AS कहेंगे, then those AS are applicable to smaller companies. And when we talk about IND-AS, IND-AS is applicable to listed companies, large corporations. They are the ones who will follow the IND-AS. But as I said, the main objective of accounting standard is that we are giving guidance to people who are preparing the financial statements that this is how financial statements should be prepared. This is, if different choices are available, these are the choices that you are supposed to follow. इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये सिस्टम है that we pick up one particular theme और फिर उस थीम के हिसाब से पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिजाइन होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है इन्वेंटरीज. तो इन्वेंटरीज से जुड़ी हुई सारी बातें, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. 11th में आपको सिखाया होगा ना इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी कैसे दिखाते हैं P&L में. Closing inventory. How do you select the amount? अगर cost और market price दिया है तो whichever is lower, right? Yes or no? Yes. That is given in accounting standard 2. In 11th, no one tells us, right? In 11th standard, our accounts teacher does not tell us कि एक accounting standard जैसा भी कुछ है, उसमें लिखा है कि this is how inventory is required to be valued. हम तो बस उन्होंने कह दिया तो हमने फॉलो करना भी शुरू कर दिया, isn't it? But it is something which is there in the accounting standards. So as we move ahead, then we realize कि okay, ये सारी चीजें जो हम पहले 11th 12th में करते थे, जब हम लोग को किसी ने बताया नहीं कि ऐसे करना है, लेकिन ये सारी चीजें actually accounting standards में लिखी हुई है, and accordingly we are doing its accounting. So what an accounting standard will do, it will pick up a theme. Relating to that theme, whatever are the requirements, everything will be taken care of. जैसे for example hire purchase की बात करते हैं, right? अब hire purchase है कि फिर leasing है कि फिर acquisition, purchase of the asset है, क्या exactly है वो? So an accounting standard will have to guide us
किसी ये कंडीशंस होगी तो ये हायर परचेस कहेंगे, अगर ये है तो ये लीजिंग का ट्रांजैक्शन है, अगर ये है तो फिर ये एक्विजिशन है. So accordingly I will come to know by applying the accounting standard that how the item is required to be recognized. That is the first thing. अब मैंने समझ लिया कि ओके ये लीज का ट्रांजैक्शन है सपोज, तो अब मुझे नेक्स्ट ये चाहिए कि उसको मैं मेजर कैसे करूंगा. हाउ विल आई मेजर दैट आइटम, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री के लिए आपको अमाउंट तो चाहिए, isn't it? Without amount I can't record an accounting entry. तो क्या वो अमाउंट होना चाहिए, that amount का गाइडेंस भी कहां से आएगा. It will come from accounting standard only. The accounting standard will only tell us कि see this is the amount. Then the third will be how will I present it in my financial statements. Financial statements में उसको कैसे दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है तो कौन से हेड के नीचे दिखाना है, P&L में दिखाना है तो किस तरीके से दिखाना है, तो वो गाइडेंस भी कहां से आएगा, फ्रॉम एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. और फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर द डिस्क्लोजर्स, राइट. You will have to then provide additional disclosures so that you are getting more information with respect to that particular transaction. So this is the reason, right, that why we require the accounting standard. This is the purpose which is served by an accounting standard, that it will guide us how exactly the accounting is needed to be carried out. और सारी चीजें एक ही AS में मिल जाएगी. मतलब किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप हो कि ये लीज का ट्रांजैक्शन मुझे कैसे करना है, तो आई हैव टू सिंपली रेफर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू लीज एंड आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन regarding leases in that very accounting standard itself. So this is the reason that why we require accounting standards. जैसे एक जो हम करेंगे accounting standard 2 which is inventories, तो inventories की सारी चीजें उसमें आ ही जाएंगी. काफी चीजें जो आप कॉस्टिंग में करते हो, राइट, कॉस्ट शीट बनाते हो फॉर एग्जांपल, so many things are given in the accounting standard itself कि उसको इस तरीके से ही आपको करना है. हम जब पढ़ते हैं तो we study it as process costing कि भाई joint products है, by products है, किया होगा आप लोगों ने, right? So what happens is all this guidance is basically there in the accounting standard itself. So we will get a lot of information as we are applying any of the accounting standards. Fortunately for you guys, you have only 5 accounting standards which we will be going through one after the other. आज ही पूरा complete नहीं हो जाएगा, but we will be gradually taking care of the same. So is everyone comfortable with the, what you can say, introduction of what accounting standard is all about? Yes. Right. So if you just see, we have the write-up available. We can just go through that also. Okay. So if you just go through the write-up, they are saying that accounting standards we say that accounting standards are written policy documents issued by क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको पसंद नहीं आ रहा या ये मुझे पसंद नहीं आ रहा.
आप लोगों को कुछ मटेरियल दिया है या इसमें से देख के ही पढ़ते हो आप लोग? हाँ, इसमें से देख के ही पढ़ते हो? ग्रेट. Yeah, so we said accounting standards, they say it's a written policy document issued by the government with the support of other regulatory bodies. Ministry of Corporate Affairs, for example, it is issuing accounting standards for corporates in consultation with that NFRA जो हम बात कर रहे थे, that is the National Financial Reporting Authority. It covers various aspects of recognition, measurement, treatment, presentation, and disclosure of accounting transactions in the financial statements. See, only one institute cannot really do anything. If you are like that Institute of Chartered Accountants of India, they will frame accounting standards or everyone will start following it. India में unfortunately ऐसा कभी होता ही नहीं है, right? Laws तो India में बहुत है, लेकिन follow कौन करता है? Am I right? Right, because that's how the fact is. So you require support coming from the government bodies also. That's the reason I told you earlier also that it was necessary that accounting standards get notified under the Companies Act. And that's what Ministry of Corporate Affairs is doing. Accounting standard will be formulated and the MCA will then notify it. And once it will be notified, then it will become applicable to the companies. We are more interested in accounting standards which are applicable to companies rather than proprietary concerns, partnership firms. क्योंकि अगर मैं मेरा खुद का बैलेंस शीट बना रहा हूं तो उस बैलेंस शीट में you guys are not really interested, right? लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, then you are definitely interested in knowing what exactly is the financial position of that company. या तो फिर आप सोच रहे हो कि I want to invest in some company's shares, then I again want a balance sheet, a P&L which is properly framed by the accounting standards. So that's the reason. The accounting standards which are applicable to companies, they are more important because this will be where public in general are interested. So what do the accounting standards really deal with? जैसे हमने कहा था, right? It will recognize the events and transactions in the financial statements. So let us say you are doing a takeover. आपने किसी दूसरी कंपनी को take over किया. So what exactly is the nature of this transaction? वो accounting standard will identify that, see, this is the nature of the transaction and अब उसका accounting आपको ऐसे करना है. Amalgamation पढ़ा होगा आपने? आ गया amalgamation? Right. So AS 14, accounting standard 14, for example, जो amalgamation का accounting standard है. So that accounting standard will recognize that, see, this is the event which has actually happened, कि आपने amalgamation किया है. Then next is measurement of these transactions and events, right? अगर आपको amalgamation याद है, तो उसमें एक working note आता है purchase consideration का, जहां पर आपको उसको measure करना पड़ेगा कि exactly क्या-क्या amounts आपको वहां पे डालना है, right? फिर उसको आपको compare करना पड़ेगा with net assets taken over. तो वो net assets taken over कैसे calculate करना है? अगर आप amalgamation in nature of purchase follow कर रहे हो तो एक तरीके से होगा, अगर amalgamation in the nature of merger है तो अलग तरीके से होगा. तो ये सारी चीजें आई कहां से? This is all happening because of the accounting standard, because accounting standard is guiding us कि उसका measurement आपको कैसे करना है. Next is presentation of these transactions and events in the financial statements in a manner that is meaningful and understandable to the reader. अब इसको बैलेंस शीट और P&L में इस तरीके से दिखाओ कि जो भी वो बैलेंस शीट P&L पढ़ रहा है, that person can understand that P&L and that balance sheet, right? Because see, when you are full-fledged involved in the accounts, then you know everything about the accounts, right? For example, अगर आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हो तो आपको पता है कि आपने पूरा अकाउंटिंग कैसे किया. लेकिन मान लो मैंने अकाउंट्स नहीं किया है, डायरेक्टली किसी ने मुझे P&L दिया, डायरेक्टली किसी ने मुझे बैलेंस शीट दिया, तो सिर्फ बैलेंस शीट और P&L देखकर मुझे कैसे समझने का कि पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरीके से हुआ होगा? I hope you are getting the difference, isn't it? Right? For example, अगर आपने Reliance Industries के शेयर्स मान लो आपने खरीदे और आपको उसका एनुअल रिपोर्ट मिलता है, अब हम थोड़ी ना एवरीडे रिलायंस में जाके देख रहे हैं कि वो अकाउंटिंग कैसे कर रहा है.
हमारे पास तो सिर्फ P&L और बैलेंस शीट ही है, वो P&L और बैलेंस शीट से ही मुझे समझ में आना चाहिए कि उसका अकाउंटिंग कैसे हुआ होगा. So that is where an accounting standard will come into picture. So how these items are to be presented so that people who are reading it can understand it, and after understanding it you can take some meaningful decision, right? And finally they say the disclosures. Disclosures means in addition to what you are showing in the balance sheet and the P&L, बैलेंस शीट और P&L के अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए, so that the reader of the financial statements will understand that even better. Getting it? So ये चार चीजें हैं जिसमें accounting standards will deal with. Number one, it will recognize the transaction. Second, it will help you to measure it. Third, it will help you to present it. And fourth, the disclosures, additional disclosures. By disclosure we mean not what you are showing in balance sheet and the P&L. उसके बाद एक बार बैलेंस शीट और P&L खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएंगे डिस्क्लोजर्स. आपने कभी भी किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखा हुआ है? Have you ever seen annual report of any company? नहीं देखा है तो देख लेना. सिर्फ किसी भी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे जाना है और वहां से आपको सिर्फ डाउनलोड कर लेना है. दैट्स ऑल. रिलायंस का अगर आपको देखना है, यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, डाउनलोड द एनुअल रिपोर्ट, एंड you will be able to see in that annual report बैलेंस शीट रहेगा, P&L रहेगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट रहेगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा, और उसके बाद आएंगे डिस्क्लोजर्स. 30-40 पेजेस के सिर्फ डिस्क्लोजर्स ही होते हैं, and these disclosures are demanded by different accounting standards. क्योंकि वो डिस्क्लोजर देखकर ही मुझे ज्यादा समझ में आएगा that how exactly the accounting was carried out. So ये सारे जो disclosures हैं, they are demanded by different accounting standards which are applicable. Okay. Next is, what are the objectives of accounting standards? Now, accounting standards reduce to a considerable extent or eliminate altogether wide variations in the accounting treatments used to prepare and present financial statements. Right? वो जो हम कह रहे थे ना, science है या art है, we know that to a certain extent, a lot of possibilities are there when you are carrying out the accounting. फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री का एक केस ले लो. ये तो हमने, हमारे अकाउंट्स टीचर ने कह दिया कि लोअर ऑफ द टू, तो हमने सिलेक्ट कर लिया लोअर ऑफ द टू. और मान लो किसी ने आपको कहा ही नहीं है, देन व्हाट आर द डिफरेंट वेज? इन्वेंट्री का कॉस्ट दिया है तो आई विल फील कि नहीं मैं तो कॉस्ट पे दिखाऊंगा. समवन विल बी लाइक कि नहीं उसका मार्केट प्राइस दिखा है तो मैं मार्केट प्राइस पे दिखाऊंगा. समवन विल बी लाइक कि नहीं दोनों का एवरेज ले लेते हैं, उस हिसाब से उसको दिखाते हैं. So many choices which are actually available. We have to eliminate those choices. Only then accounts will become comparable. Otherwise, accounts will not be comparable. आप खुद ही सोच लो, अगर कुछ भी लिखा, कहीं पे भी कुछ भी गाइडेंस नहीं है, तो कोई स्टूडेंट कॉस्ट पे ले रहा है इन्वेंट्री, कोई स्टूडेंट मार्केट प्राइस पे ले रहा है इन्वेंट्री, कोई स्टूडेंट लोअर ऑफ द टू कर रहा है, कोई स्टूडेंट हायर ऑफ द टू कर रहा है. और चलो एक समय मान लेते हैं कि एवरीथिंग इज अलाउड, everything is allowed. Let's say, what will be the life of the person who will check your supplement? जिसको आपका सप्लीमेंट चेक करना है, क्या होगा? क्योंकि हर एक का आंसर राइट ही है, तो मुझे तो 4 या 5 अलग अलग आंसर चाहिए. अरे अच्छा, इसने कॉस्ट पे लिया है तो इसका ये प्रॉफिट आएगा, अरे इसने मार्केट प्राइस पे लिया है तो इसका तो ये प्रॉफिट आएगा, और फिर हर एक को मुझे मार्क्स देने पड़ेंगे क्योंकि हर एक चीज राइट ही है. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट as much of different possibilities which are there. So we are saying that it is reducing a considerable extent or eliminating altogether wide variations in accounting treatments used to prepare and present financial statements. Thus, the basic objective of an accounting standard is to harmonize the diverse accounting practices followed in the preparation and presentation of financial statements so as to facilitate intra-firm and inter-firm comparison. This is one of the biggest goal of any accounting standard. एक कंपनी का बैलेंस शीट दूसरी कंपनी के बैलेंस शीट के साथ कंपैरेबल होना चाहिए, और उसी कंपनी का बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के साथ भी कंपैरेबल होना चाहिए. अदरवाइज
there is no purpose of preparing balance sheets and P&L. और जब मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं, I am talking about company in the same industry. Let us say I want to invest in shares of either TCS or Infosys. किसी एक कंपनी के शेयर में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसका बैलेंस शीट P&L सब स्टडी करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि ज्यादा अच्छा शेयर कौन सा है. Tell me, how will I really do this? TCS है ना, अपने खुद के एक तरीके से बैलेंस शीट बनाता है, और Infosys का एक और ही अलग तरीका है बैलेंस शीट बनाने, और दोनों का बैलेंस शीट लेकर मैं बैठा. And now I want to decide that which one is a better investment. दो अलग अलग तरीके की बैलेंस शीट्स मेरे सामने है. Do you feel it is going to be very tough for any one of us to do the analysis? Yes or no? Yes. Isn't it? आप समझ सकते हो ना, जब हम लोग आपके पेपर्स चेक करते हैं कितनी दिक्कत आती होगी हमको, क्योंकि कोई स्टूडेंट एक तरीके से बैलेंस शीट बना रहा है, किसी ने लैंड एंड बिल्डिंग पहले लिखा है, तो किसी को लगता है कि नहीं मैं तो गुडविल पहले लिखूंगा, किसी को लगता है नहीं प्लांट एंड मशीनरी पहले लिख लेते हैं, किसी को लगता है जो मन में पहले आते हैं वो लिख लो फिर भूल जाऊंगा. You get my point, right? Can we do this in real life? एग्जाम कंडीशंस में ये सारी चीजें होती है, एग्रीड, बट कैन वी डू इट इन रियल लाइफ? कि जो मन में आया, जैसे मन में आया बैलेंस शीट बना दिया. टैली होना चाहिए, बैलेंस शीट टैली है, बट दैट विल नॉट बी सो. इट हैज टू बी कंपैरेबल. टीसीएस का बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है और जो उसने दिखाया है वही इन्फोसिस में भी होना चाहिए. तो लाइन बाय लाइन आई कैन मेक अ कंपैरिजन एंड आई कैन कंपेयर द टू फर्म्स. और जो भी मुझे कैलकुलेशंस करने हैं, अगर मुझे उसका अर्निंग्स पर शेयर निकालना है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, जो भी रेशियो एनालिसिस मुझे करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज it is comparable. And that is one of the main objectives of an accounting standard, that financial statements of one company should be comparable with financial statements of another company. Not only this, same company का भी फिर comparable होना चाहिए. आज मैंने एक तरीके का बैलेंस शीट बनाया, फिर एक साल के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, इस बार तो ऐसा फॉर्मेट बनाकर हम बैलेंस शीट बनाएंगे. That will also not make any sense at all. It should be comparable across the firms. It should also be comparable within the firm also. इसलिए वो लोग कह रहे हैं intra firm as well as inter firm, both the comparison should actually become possible, and that is one of the objectives, goals of an accounting standard. Okay, what are the advantages of setting accounting standards? Accounting standards से क्या फायदा होगा? Yes, the first one is to provide the accountancy profession with useful working rules, right? So we are trying to make certain rules कि भाई इतना सारा वैरायटी है, इतने अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन ये सारा आप छोड़ दो, इस तरीके से इसको करना है. So this is one of the advantages of an accounting standard, कि एक guidance मिल गया, you know, कि ये transaction का accounting इस तरीके से ही होगा. Second, it says it assists in improving the quality of the work performed by the accountant. So you have a clear guidance as an accountant that this is how it is to be done. So automatically the quality of work will improve. फिर मैं अगर इन्वेंट्री का अकाउंटिंग कर रहा हूँ, या आप इन्वेंट्री का अकाउंटिंग कर रहे हो, या कोई भी और अकाउंटिंग कर रहा है, हर एक का अकाउंटिंग सेम ही रहेगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होना है. तो एक यूनिफॉर्म क्वालिटी कैन बी मेंटेन्ड. Third, it says it strengthens the accountant's resistance against the pressure from directors to use accounting policy, which may be suspected in the situation in which they perform their work, right? So in professional life, this is very much true. So many times the management will pressurize you कि नहीं इसका accounting आप ऐसे कर लो, किसी को पता नहीं चलेगा, आप कर लो. But we as an accountant, we have an accounting standard to show कि see इसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा नहीं कर सकते, so we cannot actually do this. So that is the reason we have a framework that we can show to someone, and we can actually be able to manage these pressures. Then it says it ensures the various users of financial statements to get complete crystal information on more consistent basis from period to period. So because there is a consistency, I will be getting same kind of information from the financial statements.
ईयर बाय ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरीके से ही प्रिपेयर होंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल जनरेट डेटा। अगर आज आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, लेट्स से हम तो पहले बात कर रहे थे कि हमको शेयर्स खरीदने, लेकिन आपको शेयर्स नहीं खरीदना, आपको 20% शेयर्स किसी कंपनी का खरीद लेना है या 25% शेयर्स किसी कंपनी का खरीद लेना है, तो सिर्फ 1 साल की बैलेंस शीट से या 2 साल की बैलेंस शीट से काम नहीं बनेगा। यू विल रिक्वायर पास्ट फ्यू ईयर्स डेटा, और वो सब it has to be quality data, and quality data can be ensured only when you have followed the accounting standard. And finally, it helps the users to compare the financial statements of 2 or more organizations engaged in the same type of business operation. वो हमने पहले भी कहा था that we are ensuring that you can compare financial statements of one company with financial statements of another company, and that is one of the main advantages of an accounting standard. इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डिसएडवांटेजेस नहीं है, राइट? वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज एज अ स्टूडेंट इज कि हमें पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते ही नहीं तो कितना अच्छा है, isn't it? तो ये टॉपिक ही नहीं होता। What do you say? But that is not the disadvantage. ये लिख के मत आ जाना। So what exactly are the disadvantages? क्या रहेगा disadvantage? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का disadvantage क्या हो सकता है? What are the possibilities? सब पढ़ना शुरू कर दिया, मेरी तरफ देखो। What exactly can be a disadvantage of accounting standard? Someone may feel that it is killing the creativity, right? Accounts, we were saying it is both science as well as art. So since it was an art, there was so much of variety it was available. कितनी सारी चीजें हम कर सकते थे accounts के टाइम पे, बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे, P&L के बनाने के टाइम पे, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेइंग नहीं ऐसे ही करना है, दैट्स इट। आपने एक रूल बना दिया, isn't it? So that can actually work as a disadvantage of the accounting standard itself, because now I am confined to certain rules and certain regulations. मेरा जो एक creativity था accounts बनाने में, that will no longer be there. I have to now do it in a very uniform manner. So that can turn out to be as a disadvantage for an accounting standard. So other disadvantages, if we see, the first one they are saying is users are likely to think that the said statements prepared using accounting standards are infallible. Infallible मतलब इसमें कोई mistake possible ही नहीं है. A lot of people are like that कि accounting standard follow कर लिया है मतलब अब सारी चीजें बराबर ही है. That is not so. अगर ऐसा होता तो फिर audit का पूरा profession ही develop नहीं होता, right? अगर accounts पूरा accounting standards के हिसाब से हो गया and everyone is like हाँ सब बराबर ही है, then there would not have been anything like audit, isn't it? But we do have different types of audit. Cost audit भी होता है, statutory audit भी होता है, internal audit भी होता है, which clearly means that even if you are following accounting standards, still it does not mean कि आपके financial statements full proof हैं. कितने सारे scams आते ही रहते हैं ना from time to time, especially relating to accounts also. There are so many times a lot of frauds which are going on. We realize कैसे कैसे हो गया, but still it does happen. Second is they have been derived from social pressures which may reduce the freedom. वो कहा ना वो creativity जो था ना, एक जो freedom था accounts बनाने का, P&L बनाने का, balance sheet बनाने का, वो freedom is somehow going away. The working rules may be rigid or bureaucratic to some user or user of the financial statements. So certain people may feel that this is a very standard process that you have actually introduced. आपने accounts को boring कर दिया, you know. This is what a lot of people may feel. कि मैं तो अलग-अलग तरीके के P&L बना सकता हूँ, अलग-अलग तरीके के balance sheets बना सकता हूँ, कितनी सारी चीजें मैं उसमें कर सकता हूँ, लेकिन आपने कह दिया ऐसे ही बनाना है, boring कर दिया ना. What do you say? सही किया? I'm just asking you. ऐसे ही बैलेंस शीट बनाना, अगर कोई अकाउंट्स टीचर कहता है बैलेंस शीट ऐसे ही बनाना है, तो वो बैलेंस शीट को बोरिंग कर रहा है
या आपको लगता है कि नहीं ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए? रियली ऐसा ही होना चाहिए? आपको ऐसा नहीं होता कि नहीं मैंने जो जो भी दिखाया असेट को असेट में ही दिखाया? दैट इज नॉट सो, राइट? सो फॉर सम यूजर, वहां लिखा है फॉर सम यूजर दिस मे बी a disadvantage. So there, a few of them may feel okay, different other possibilities which were there, you have ruled them out. And finally, the more standards there are, the more costly the financial statements are to produce. It is very natural. Accounting standards jitne jitne बढ़ जाएंगे, you require then a person who is expert in those accounting standards, and then that person will then prepare the financial statements. Gradually it will be outside the scope of a normal accountant. So कोई normal regular accountant है, उसके बस की बात नहीं रहेगी to prepare a financial statement. You now require an expert, and if someone is an expert, that person will definitely charge. And because that person will charge, आपका जो cost है financial statements बनाने का, that cost has actually increased. So that can also serve as a disadvantage. लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को देख ले तो एडवांटेजेस आर डेफिनेटली मोर कंपेयर्ड टू द disadvantages. As far as the accounting profession is considered, there are more advantages, right, when you are following the accounting standard. And even as a user also, जब मुझे किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा, मुझे एक थोड़ा एश्योरेंस होता है, राइट, कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके उन्होंने बनाया है, बस अपने मन में जो आया वैसे उन्होंने बनाया नहीं है. So that assurance is also very important, because entire accounting profession, it works only on trust and nothing else. What do you say? If I go to a bank and I present my financial statements, banks will accept those financial statements. पूरा trust से ही चल रहा है. It's quite possible कि मैंने खुद पूरा window dressing करके बनाया, possible है, लेकिन ultimately they will put trust in those financial statements के नहीं, अगर आपने financial statements दिया है तो we are putting our trust in that. So that trust is something that is getting assured by the accounting standards, right? Yes, what are the Indian accounting standards? Yes. So what is NFRL? The full form of NFRL? What did I did not understand. Sir, the full form of NFRL from the sixth NFRL. question. Yes, National The Financial last Reporting Authority. Starting me here. National Financial Reporting Authority. Okay, sir. It's there in question 1. Yeah, so what exactly are the Indian accounting standards? So ये हमारे जो regular accounting standards है और अब जिसको हम Ind AS कहते हैं, तो दोनों में difference क्या है? Okay, let me ask you something. Are the laws of science the same worldwide? For example, law of gravitation, is it the same India में, US में, UK में, या वहाँ पे कुछ अलग हो रहा है? Is it the same? Law of gravitation का anecdote जो है कितना सही है, no one really knows. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि Isaac Newton, he was resting under an apple tree, और एक apple गिरा, और वो गिरते हुए देख के he was like, oh, the gravitation, and he discovered the law of gravitation. My question is कि Newton was in MS University, sitting under a tree in MS University. अबे यहाँ हमारे वहाँ तो एप्पल ट्री नहीं है, लेकिन कोई दूसरा ट्री है मान लो, और एप्पल भी नहीं है, कौन सा ट्री कोई है कोई वहाँ पे? मैंगो, चलो नारियल नहीं, देखो अपने को न्यूटन को जिंदा रखना है, राइट? सो लेट अस से ही इज रेस्टिंग अंडर अ मैंगो ट्री, मान चलो. तो व्हाट डू यू से, इंडिया में अगर वो MS यूनिवर्सिटी के नीचे ऐसे रेस्ट कर रहा होता तो वो मैंगो का क्या होता? वो नीचे ही आता या ऊपर चला जाता या कहीं बीच में रह जाता? नीचे ही आता. Are you sure? Yes. Why? Because it's a law.
It's a science law, and the law of science will remain the same everywhere. But is accounts the same everywhere? जिस तरीके से इंडिया में हम बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, क्या वही फॉर्मेट यूएस में भी है? क्या वही फॉर्मेट यूके में भी है? No. So this is not proper. No? What do you say? Is this the right thing? Accounts is different in different countries. Can we really allow this? Don't you feel this is a little bit problematic? Because there are so many, I'll tell you, there are so many expenses जो हम इंडिया में कैपिटलाइज कर देते हैं ना, उसको एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं. यूएस वाले कहते हैं कि नहीं, ये सारे एक्सपेंस आपको पीएनएल में डेबिट करने के. देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस जिसको हम डिफर करते हैं, 3 साल स्प्रेड कर देंगे, 5 साल स्प्रेड कर देंगे. देयर आर सर्टेन say US companies, there are certain laws in UK companies which are saying कि नहीं, ऐसा deferment आप नहीं कर सकते. So क्या हो रहा है? Accounts which we are studying in India, it is not necessarily that same accounting principles are there even outside India, which is not a right thing. If English language is spoken in the same way all over the world, क्या कहते हो? हमारा accent change होता जाएगा, right? The way I speak English, the way you might be speaking English, our accent will be different, but the meaning of the words, will it be the same, isn't it? So why can't we have a uniform accounting language कि जो इंडिया में हो रहा है वही यूएस में होना चाहिए, वही चाइना में हो रहा है, वही यूके में हो रहा है, तब जाके I can become or I can call myself a global accountant, isn't it? So that is the purpose of bringing Ind AS, जो ये Indian accounting standard है, that is the objective. Objective is कि जैसे accounting standard है, वैसे ही एक international accounting standard है, वैसे ही एक international financial reporting standard है, IAS and IFRS, right? So what we are doing is, हमारा जो accounting standard है, उसको हम IFRS से compare करते हैं, उसको IAS से कंपेयर करते हैं और फिर डिफरेंसेस निकाल देंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, मान लो टोटल 10 डिफरेंस निकले, सपोज टोटल 10 डिफरेंस निकले, तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम वो 10 डिफरेंस को निकाल देंगे. वी आर जस्ट रिमूविंग दोज डिफरेंसेस एंड वी वांट टू इंश्योर कि जो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वैसा का वैसा टू अ लार्ज एक्सटेंट वी हैव एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आल्सो इन इंडिया. इसको हम कहेंगे Ind AS या तो फिर Indian Accounting Standard. So what is Indian Accounting Standard? An Indian Accounting Standard is our accounting standard only, which is converged, right? The word used is converged, which is converged with International Accounting Standard, yeah, International Financial Reporting Standard. हमने इंडिया में adopt नहीं किया. We have not adopted International Accounting Standard. We have converged with them. क्या difference है दोनों में? To adopt means IAS जैसा है वैसा ही उसको accept कर लेना. That is what we mean by adoption. So जो भी international accounting standard में हम एक दिन decide करेंगे कि अब ये कंपनी accounting standard follow नहीं करेगी, अब ये IAS ही follow करेगी. So that is what we call as adoption. India has not gone for adoption because in India we are having accounting standards since very long. बहुत time से accounting standards India में है, तो हमें अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है. गल्फ कंट्रीज फॉर एग्जांपल उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने आईएएस को ही अडॉप्ट कर लिया क्योंकि उनका खुद का कोई अकाउंटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं था, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया. वी हैव नॉट अडॉप्टेड, वी हैव गॉन फॉर कन्वर्जेंस. व्हाट इज कन्वर्जेंस? As I said, we will compare our accounting standard with the international accounting standard, differences निकालेंगे और फिर वो differences को eliminate करेंगे. But in the process of eliminating the differences हमें लगता है कहीं पर कि नहीं, इंडिया में जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है वही सही है, तो फिर हम वही फॉलो करेंगे भले ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ भी लिखा हो. इन अदर वर्ड्स, वी आर इंडियनाइजिंग दोज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड because there are certain principles which we are following in India since long. We want to continue with those principles, and that is the reason we have gone for convergence and not for the adoption. So we are converging. और ये जो converged accounting standard आएगा, we will refer that as the Indian accounting standard.
बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एकदम इंडियन ही है, ऐसा नहीं कि वो फॉरेन है, लेकिन इसका हमने नाम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखा है। उसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा इंड एएस, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर फर्स्ट अल्फाबेट ही आप लोगे तो वो आईएएस हो जाएगा, और आईएएस इज अंडरस्टूड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको एक कंपनी कहेगा कि वी आर फॉलोइंग आईएएस तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर उसको पूछना पड़ेगा भाई आईएएस का मतलब क्या, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, राइट। Basically, it is copy paste of international financial statements only, but wherever we disagree with what is given in international accounting standard, we put the Indian requirement. वो कहते हैं ना, नकल with अकल. No, that is something that we are doing over here. Copy paste ही किया है, लेकिन we have tried to see कि भाई ये इंडिया में ये treatment makes sense or not. So there will be certain places where there will be differences. जहां इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिसमैच होगा, that is known as a carve out. If you see, we have something known as what are carve outs and carve ins. So carve out क्या है? What is carve out? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है कि इसका अकाउंटिंग ऐसे करना है, इंड एएस में लिखा है कि नहीं ऐसे नहीं, हमने जो कहा है वैसे करना है। सो डिफरेंस आ गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस में। तो ये जो डिफरेंस है उसको कहेंगे हम कार्व आउट। बेसिकली क्या होगा, आपको इंड एएस पता है और आपको कार्व आउट भी पता है। अगर आपको दोनों पता है देन यू नो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो। तो आपको वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी समझ में आ गया, बिकॉज अप टू द कार्व आउट तो सेम ही है, और कार्व आउट इज समथिंग which is different. So this is what will give us a basic idea. आप लोगों ने I'll give you a simple example. Amalgamation किया है ना आप लोगों ने, तो purchase consideration we compare with net assets taken over, फिर difference आता है, difference positive होगा तो goodwill और negative आएगा तो capital reserve. Capital reserve. Yes. So we will call the difference as capital reserve, और capital reserve को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे as a part of reserve. अब जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, उसमें ऐसा लिखा है कि कैपिटल रिजर्व नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर डिफरेंस आता है उसको P&L में ले जाने का। व्हाट दैट मींस इज, इफ माय परचेस कंसीडरेशन इज 10 lakhs एंड नेट एसेट्स टेकन ओवर इज 12 lakhs के मैं नेट एसेट्स ले रहा हूं और सामने सिर्फ 10 लाख का ही पेमेंट कर रहा हूं, तो 2 लाख का फायदा हुआ। तो ये 2 लाख का जो फायदा हुआ हम इंडिया में कहते हैं ये है कैपिटल रिजर्व, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि नहीं, ये कैपिटल रिजर्व नहीं है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ये तो आपका फायदा है तो उसको क्रेडिट करो और फिर उसमें से डिविडेंड भी पे कर दो। नाउ इन इंडिया दिस विल बी अ बिट टू मच फॉर अस, isn't it? क्योंकि हमने कभी भी इंडिया में ऐसा किया ही नहीं है। वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग दिस एज कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर क्या होगा, एक कार्व आउट बनेगा। इंडिया का जो इंड एएस है उसमें क्लियरली लिखा है कि भले ही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको P&L में ले जाता है, हम P&L में नहीं ले जाएंगे, हम इसको कैपिटल रिजर्व में ही ले जाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी विल रेफर एज अ कार्व आउट, वेयर वी विल डिफर फ्रॉम व्हाट इज देयर इन द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन फायदा क्या हुआ, आपको कार्व आउट अब पता है तो आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अब पता है। गेटिंग इट? कार्व आउट आपको पता है क्या है कार्व आउट, कि इसको P&L में ले जाना। तो आई नो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये P&L में जाएगा, इंड एएस में ये P&L में नहीं जाएगा। तो आई हैव नाउ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर फ्रेमवर्क, राइट? सो व्हाट आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? दे आर सेइंग दैट Indian accounting standards are IFRS, International Financial Reporting Standard, IFRS means converse standards issued by Central Government of India under the supervision and control of Accounting Standard Board of ICAI and in consultation with the NFRA, right? And finally, what are the carve outs and carve in BA? We will discuss that. Certain changes have been made considering the economic environment of the country, which is different as compared to the economic environment presumed to be existence by the IFRS. इंडिया का जो एनवायरनमेंट है और वेस्टर्न कंट्रीज का जो एनवायरनमेंट जहां से एक्चुअली IFRS और IAS आते हैं, देयर इज अ डिफरेंस इन द एनवायरनमेंट
And that is the reason it is necessary that we Indianize the accounting standard, right? आप ऐसा भी सोच सकते हो that it is something like Indian Chinese. क्या कहते हो? जो चाइनीज हमें इंडिया में मिलता है, अगर आप एक्चुअली चाइना में जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा. Will you get it? तो हम चाइना जाएंगे तो पता चलेगा. But I'm telling you it very clearly. Even some Chinese people, when they come in India and they look at Chinese, they are also wondering हम कब ऐसा खाते हैं. हम तो ऐसा कुछ खाते ही नहीं, because we have completely Indianized the entire thing. आप इंडिया के पिज्जा हट में जाओ और दुबई के पिज्जा हट में जाओ, आप इंडिया के मैकडोनल्ड्स में जाओ और यूएस के मैकडोनल्ड्स में जाओ, जो मेन्यू आपको यहाँ मिलेगा वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा. So if you are like कि मैं वहाँ जाकर मैक वेजी ऑर्डर कर दूंगा तो that will not really be possible. You are like कि मुझे वो पनीर वाला जो बर्गर है वो चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा, because we have Indianized the entire thing. तो हम भी यहाँ पे वही कर रहे हैं. Indian environment अलग है, we are Indianizing the international financial reporting standard. They say these differences are due to differences in economic conditions prevailing in India. These differences, which are deviation to the accounting principles and practices stated in IFRS, are commonly known as the carve-outs. So Ind AS or IFRS के बीच में जो difference है, we call that as a carve-out. लेकिन IFRS में कुछ लिखा है और हम उसको अब ज्यादा explain करते हैं, that will be known as a carve-in. Carve-in is not a difference between Ind AS and the IFRS. Common ground ही है, लेकिन IFRS में गाइडेंस थोड़ा कम है. हमें लगता है कि इंडिया में हमें ज्यादा गाइडेंस इस चीज के लिए देना चाहिए, तो उसी आइटम के लिए हमने ज्यादा गाइडेंस दिया. That we will refer as a carve-in. So they say additional guidance given in Ind AS over and above what is given in IFRS is termed as a carve-in. So we are giving more guidance because Indian companies will be implementing such kinds of accounting standards for the very first time. तो हमारे पास उतना नॉलेज शायद नहीं है, तो हम उसको ज्यादा गाइडेंस दे रहे हैं कि इसका अकाउंटिंग इस तरीके से आपको करना है. That we will refer as a carve in. So that will be a carve out and a carve in. So that is a holistic view of what exactly are accounting standards. Okay. So what we have been able to cover today, meaning of accounting standards, because ये जो topic है ना, इसमें से आपको objective type questions आने के highest possibility, right? That A, B, C, D, which is there, you have highest possibility. What do you mean by carve out, for example? That can be so. What do you mean by, or following is not an advantage of accounting standard, or following is a disadvantage of accounting standard? That is the kind of questions that we can expect from this particular topic. So this is what you will have to keep in mind. Kaise exactly you will be what I can say, preparing this topic from your exam viewpoint. If I just discount the exam viewpoint, then the main reason that why we are studying is because this will give us as an accountant some guidance of how accounting is needed to be done. पूरा accounts का paper जो आप पढ़ते हो, आपके accounts teacher आपको शायद बताते हैं, नहीं बताते. Many times we talk about it, many times we don't talk about it. Everything happens only as per accounting standard only. Okay. Amalgamations, भले ही आप topic कहोगे amalgamation, लेकिन वो AS 14 से ही पूरा का पूरा solve होता है. आपको consolidation आता है? Consolidate financial statements. Do you have that in your syllabus? BCom में तो आएगा ही, मतलब you will be studying CFS. वो भी accounting standard से ही होता है, right? You have to follow accounting standard 21 और उसके हिसाब से ही उसका accounting होगा. Even hire purchase भी जो आप सीखते हो वो भी accounting standard से ही होता है. There is an accounting standard relating to leases और वो accounting standard hire purchase को applicable रहता ही है. And that is the reason that's how the accounting will be done. Inventory ले लो, construction contract ले लो, कुछ भी आप ले लो, पूरा accounting is actually revolving around different types of accounting standards only. Comfortable? Yes. Okay. I think we have the still 1 o'clock, right?